वेलकम एवरीवन गुड मॉर्निंग ऑल जय जगन्नाथ समस्त को ओडिशा सिविल्स को बहुत बहुत स्वागत आज बहुत दिन परे बिकॉज ऑफ फ्यू एग्जाम्स मोर थिला हाई लेवल एग्जाम सो आई वाज बिट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू सो बर्तमान आज स्टार्ट करवा कि जो बजेट एवं किस दिन तले आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहन माझी सर जो रिप्रेजेंट कर प्लस हम ओडिशा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर तापर आज बहुत डिस्कशंस करवा रिगार्डिंग द बजेट ऑफ ओडिशा एंड दिस इज वेरी क्रूशियल with respect to your prelims and mains also बर्तमान जो टाइप रो क्वेश्चंस जदि आसुची हमें देखिबा ताले बजेट रो माने इकोनॉमिक सेशंस खाली इटा न हो केवल इकोनॉमिक क्वेश्चंस फॉर टू बी वेरी फ्रैंक केबे भी नुह के भाइबेनी कि केवल हमरो एथि पई ही इंपोर्टेंट इकोनॉमी पई सबु फील्ड रे वेदर इट इज एन एग्रीकल्चर वेदर इट इज एन इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी रो पूरा वास्ट एनवायरनमेंट पोर्ट कम्युनिकेशन सब जिनस बहुत इंपोर्टेंट यहाँ जोटा कि हमें डिस्कस करवा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि बजेट रो इंपोर्टेंस कौन जोटा हमें जानी कि बजेट इज बेसिकली सेमती किछि नहीं इट इज बेसिकली एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट इट्स एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा कि गवर्नमेंट जदि हमें देखिबा कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेमती किछि मेंशन नाही राइट प्रीवियस वीडियो रे भी सेम जिंस होतला हमें सेंट्रल बजेट इंडियन बजेट डिस्कशन कला बळे को सेम जिंस कहथि सेमती किछि नाही बट इट्स एन बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो नथिंग टू कंफ्यूज अबाउट दिस वन एंड आर्टिकल 200 इज बेसिकली डील्स विथ दिस राइट सो वर्तमान हम आगु बुझिबा बजेट जदि हमें देखिबा कि दिस टाइम बजेट रे कोन सबुठ खूबी अछि मन दे कि देखिबा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल राइट सो ओडिशा बजेट गोटे समरी जदि हम देखिबा चीफ मिनिस्टर मोहन माझी सर एंड द represent state budget for the 2026-27 financial year estimated around 3.1 lakh crore पाखापाखि जदि हमें देखिबा ऑन एन एवरेज 3.1 लाख crore रो बजेट ता अछि जोटा कि प्रीवियस ईयर टू निश्चित रूपे 8 to 10% बहुत अधिक अछि राइट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टू जब हमें देखिबा देन एटी मन दे कि सुनिबा मु समस्त को गोटे रिक्वेस्ट करबी कि खाता पेन धरिकी बस कारण आज बहुत बड़े डिटेल एनालिसिस मु देछि टोटल हम सिथरे करबे जोतरे कि जोटा प्रीलिम्स पे इंपोर्टेंट मु कहि दियो जोटा मेंस पे दरकार इवन इफ ए जिंसटा भी जो माने एथर का इंटरव्यू पे अपेयर हो दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर एवरीथिंग तो सेटा को जस्ट स्टे कनेक्टेड आउ जिंस गुडा को नोट करना सो दैट इट विल मेमोराइज मन को खाली सुनिले हबनी लेखिया को पड़िबो हला इफ यू वांट द रियल रिजल्ट so हमें जानले कि 3.1 lakh crore and which would accelerate the development and fulfill of the dreams hopes and your aspiration of people across the all sections of in Odisha जहाँ भी हम society रो जितनी अच्छी maximum section it will cover right this budget has aligned with national vision for development referring to long term goals linked to the year 2026 and to 47 जब हम 2036 to 47 देखिबा ए बजेट रो लिंकिंग हमें देखिबा ओके इट हैज गॉट ए लिंक हला लिंक टू 2036 टू 47 जेमति फॉर एग्जांपल्स मु कहबे कि फर्स्ट जदि हमें देखिबा कि विकसित ओडिशा जेमति विकसित भारत अछि सेंटर रे ओके सेमति नारा दैट इज योर विकसित ओडिशा 2036 एंड पूरा गोटे जदि 47 ए रेंज भीतर ही हमें रखिबा 36 टू 47 भीतर मैक्सिमम जोटा कि हमरा union government of the same Viksit India and same thing it pertains to here also right next body but this budget is not merely an account of revenue and expenditure jani bhai budget is an very heavy in terms of your values man rakho human life रे जहाँ भी हमें करूछु त माने जो भी सिस्टम सिविल सर्विस चूज एज एन कैरियर जहाँ भी तमे करूछु इट इज फॉर द सर्विस so human values are more important that will be become the driven factor for you to type same the exactly same manner government ro be driven factor है people है service of the people and that is the driven factor see जो केटी लिखा है this is not merely an account of revenue and expenditure for the coming year it is a firm decisive step towards the building prosperous strong and inclusive Odisha right inclusive माने it's a collective approach for all मन को एगुडा मु काहे के तुमको डिस्क्राइब करछि बिकॉज़ मेंस रे तुम लिखिला बेले तुम हेल्प हो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मेंस इंपोर्टेंट फॉर योर मेंस एनालिसिस
ठीक अछि मेंस एनालिसिस रे तमर जो क्वेश्चन देखुछ तरा केंति पडुची हैला आउ से गोटे लाइनर क्वेश्चन नाही मेंस रे भी से गोटे पैराग्राफ बढ़िया क्वेश्चन पडछन सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरी डेप्थ मीनिंग then only you can able to write the answers, right? Next, keeping vision at apex, the budget prioritize kon करछि the budget prioritize the infrastructure development हैला infrastructure development को करा है one by one सब डिस्कस करबा आज capital investment urban development port led growth port माने बंदरगाह बंदर को ऊपर बहुत बढ़िया जी अच्छी डिस्कशन रे industrialization agriculture and irrigation so these are the key areas with this budget focus हैला key areas to focus एट में लिख ली कौन key areas in budget रे एगुडा सब होला key areas right key areas these are the very key areas of the budget कोथरे जानले capital जब देखले industrialization agriculture irrigation port led development urban development capital development and infrastructure काहे की port को देरा होची because जदि हमें location wise देखिबा ओडिसा रे गोटे strategic location अछि right एनी अरेबियन जदि हमें देखिबा कि इंडियन ओशन साइड रे ओके बे ऑफ बंगाल साइड रे हमर ओडिसा रे गोटे स्ट्रेटेजिक लोकेशन अछि सो ओडिसा इज कोहा जे कि कोलकाता परे जदि इंपोर्टेंट जदि आसु जे हमर पूर्वी भारत रे देन इट इज ये हमारा ओडिसा है हैला मैक्सिमम आज में देखिबा ओडिसा ऊपर पारादीप रु केमति आज बहुत सारा बढ़िया बढ़िया डिस्कशन क्षेत्र में करबा नेक्स्ट so let's come to this part this an economic classification of budget 2026-27 हैला जदि हमें देखिबा कि सेग्रीगेट करियो कि ए 3.1 लाख करोड़ एटा कोठी सेग्रीगेट हेछि राइट एटा कोठी सेग्रीगेट हेछि सो एक्सपेंडिचर जानिबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जदि देखिबा इट इज पाखा पखी 1.14 लाख करोड़ माने 100 हला 1.14 लाख करोड़ जदि हम देखिबा केते 1.14 lakh crore गोटे गला program expenditure माने various schemes of the government एटा नोट करी रखो whether it is an state government state sponsored government program हला state government sponsored हो कि central government schemes हो तो सेही जगह केते रहउची 1.8 lakh crore right इटा रहला CR right next disaster risk management funds that is near about 5.4k crore then transfer from the state that is near about your hochi tomorrow ye 10,000 10.6 crore hala 6k crore so all total missing that is your 30 hala 31,000 jodi hame dekhiba ki 310,000 or let's say 3.1 lakh crore has been आ भितर देखियो यदि तुमको एग्जाम रे धर प्रीलिम्स रे पचारे काहार परसेंटेज अधिका से भितर तुम कहबो दिस इज प्रोग्राम एक्सपेंडिचर मिट रखि दोज धर प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसिला व्हिच अमंग द फॉलोइंग ये चारटा चॉइस अछि सपोज प्रीलिम्स रे तुमको देछि ए बी सी डी राइट व्हिच अमंग द फॉलोइंग you know having maximum percentage that bearing the expenditure cost then your answer should be 58% this is your first second assi program expenditure asla first रे administrative expenditure asla second रे third रे asla tamara transfer from the state fourth रे asla tamara this is your disaster risk management now the question is that why disaster risk management कौन पाई disaster risk management fund रे पाखा पाखी 5400 कोटी टका let's say approximately I'm telling about the figure why because it is the geographical locations of Odisha in Asia हैला geographical location जदि हमें देखिबा कि एशिया रे ओडिसा रा और हमर इंडिया रे जदि ओडिसा रे देखिबा geographical locations because of the vulnerability of the natural calamities like your cyclones हैला cyclones floods एथि पई disaster risk management काहे कि गवर्नमेंट 5400 कोटी टका कहला and that is why Odisha becoming an iconic state in the world we have got already appreciations from the UN and other international organizations for for combating the disaster risks your management or vulnerability we have already proved that and it was from last 25 years we have done it right so again we are running on the path आगु जे भलो भाबे I would request everyone again pen paper नै कि बस बहुत डीप एनालिसिस करिया मन रख प्रीलिम्स हो मेंस हो कि इंटरव्यू ऑल सेक्शंस 8 रे तुमको खाली हेल्प करे केवल भाबनी जे ए जो आज डिस्कशन तुमको हेल्प करियो ओनली तमर प्रीलिम्स पाई नो एब्सोल्युटली नॉट मेंस लिखिया पई बा प्रीलिम्स रे आउ इंटरव्यू रे राइट सो आगु जिबा हला रुपीस आसी कोटू हला क्विकली म करछि कंसोलिडेटेड फंड जे तुम देखियो रुपीस कोट आसी स्टेट्स ओन टैक्स थ्रू स्टेट ओन टैक्स रो हमर आसी 21.67 रिकवरी फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस सेठी रहिछि
then states own non-tax, share tax, grantee aid, loans from different, and these are the total pie chart. Pie chart रे government show करचंदी hello honorable government and financial department of Odisha, they have showed where the rupees come from. And next we'll see the rupees goes out, same from the consolidated fund where the debt servicing, interest payment ramar jauchi, then your repayment of the loans, debt serving, and your disbursement of the loans and salary pensions and other revenue expenditures. Next, expenditure from the capital sector, disaster risk funds and transfer. So sabu ei jo pie chart रे sabu jinsa rahiche, and you can have a note of this ones after the class. तमे निजे लेके segregate करी लिखि दो, definitely it will helpful. अच्छा वर्तमान हमें आसीबा आगु analysis को पुणी will come back. कौन रहिबो alongside these sectors, the government remains fully committed to the holistic development of the people through education, healthcare, social security, empowerment of scheduled caste and scheduled tribes, and women and child welfare, and efficient citizen centric services. जदि हमें देखिबा प्रथमे गवर्नमेंट इतने सुंदर जो थॉट प्रोसेस अछि, यू नो फर्स्ट फोकस जदि तमे देखिबो कि मैक्सिमम दिखाई कि ना सोशल वेलफेयर को सेटा गोटे डिस्कशन हम करबा हला. प्रथमे मु कल्चर टाको एथमे रखि छि बिकॉज़ यू नो सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ अछि, सेतमे कल्चर को आगे रखि छि जोथरे कि आरंभ करिवा हमर महाप्रभु श्री जगन्नाथ को पाखरु आरंभ करिवा, तापर देन विल गो फॉर फॉरवर्ड डेफिनेटली, राइट. बट ए फोकस जदि तमे देखिबो ए बजट रे से माने एक्सक्यूज मी, they have prioritized the the people, and khas kari the women and the children, because they are the backbones or they are the future of the country. So very essence thoughtful tame mu kahibi means lecture kemti same taku tame kemti open up kariyo, how to full of futevata bloom karibata bahut bada jinsa. And writing skills, when you write in the mains exam you have to bloom hela kodha taku bloom karibo, then only things will matter, right. agar asba jana to start kariba कि पूरी विल सी एज ए एनरिचिंग कल्चर. फर्स्ट स्टार्ट करिया कौन कल्चर का हमर कौन देखा ओडिया संस्कृति प्रति कौन हमर बजेट र कौन फील देखिबा. पूरी विल सी ए मेजर हेरिटेज एंड टूरिज्म अपग्रेड, okay, with 1,000 crore allocated for the Jagannath your interpretation center to showcase Jagannath temple ro Jagannath jo हमर संस्कृति अछि कल्चर को ता पई ताको हरि मोट करिया पे, because the very sentiments of Odisha, not only Odisha, also the the entire South Asia region is depending. It acts like an AP center, okay, that's driven the peoples or binding the people together. That has to be kept in note, right? So center showcase, preserve and promote the rich Jagannath culture, while also supporting the restoration efforts at Gundicha temple, MR Mutt, हमें जानी चाहिए MR Mutt, and Pramod Udyan, and the historic your Raghunandan library, and aris 1,000 crores hala jodi rupees 1,000 crore world tourism center to boost the town's appeal for the global tourism destination. khali aji jodi tam puri dekhibo, then transcend metamorphosis bahut sara changes hai. People from various corner of the world they came to our Puri, amar Jagannath pakku asuchendi, बहे बहे अबड़ा खाई जाउछन खुशी की समुद्र जाउछन. सो दिस इज थिंग्स आहुरी ताको करिया पई हला टूरिज्म हब टूरिज्म सेंटर करिया पई ए जिनसर गवर्नमेंट एफर्ट्स प्लस the spirit of dedication and devotion also. The government has also launched the Samarpan, hela Samarpan boli eta सब note करिवो, eta prelims पे Samarpan a digital hundi system. हुंडी रे हमें कोन कर जाई पैसा पको हला हमर भक्तिर दान हमें वेरी जदि हमें देखिबा कि हुंडी रे हमें करू कोन कि पकई कि हमर निजर मन कथा हमें प्रभु को जणै. Exactly, that is what system those people some nije bhava khal to physically habani, those who are your stationed or located far miles away, 1,000 miles away from the Puri, seman ko भी सुविधा रखा है क्यों कि digital hundi system semane kari paribe, enabling the devotee to make online donations semane dei paribe Jagannath temple ko, okay, conveniently and transparently from anywhere world ro kono si jagar semane eta kari paribe, digital platforms like using the UPI. That is what the strength of our India. Just make a note of it. प्रथम थर पई हमर ओडिसा रे हला समर्पण बोली गुटे हला जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो थरे कि समान डिजिटल हुंडी सिस्टम से कर हला पीपल, whether you are in US, whether it is you are in Bolivia, whether it is in Argentina, whether it is in Europe, Russia, कोड भी Australia, New Zealand, जो भी था तुम you can go for your devotion. That means it makes an direct impact on your brain for the devotions to the Jagannath culture, right? So
मु तो कहबी कि मोर वर्ल्ड टूर जते मु जाइछि सब जगह रे मु देखि मैक्सिमम साउथ ईस्ट एशिया रे हला प्राय साउथ ईस्ट एशिया कवर करछि आई हैव सीन कि सेठी लोकंकर डेडिकेशन आज भी सेठी समान से जिनसरा मानंती कि कल्चर हमर सच एन सच एन हाई स्ट्रेंथ और हाई वैल्यूज कल्चर वी हैव जगन्नाथ कल्चर सो द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथनिंग द डिवोशन एंड डेडिकेशन ऑफ जगन्नाथ संस्कृत कल्चर हला ए जो जिनसटा जगन्नाथ कल्चर संस्कृति रो डेडिकेशन और डिवोशन को आहुरी ग्लोरीफाई करी okay so this is culture upar gala now come to the social welfare sector good morning prabhu jai jagannath good morning yes so आगे देखिबा social welfare and sector कोन हिची जदि हम ई बजट को हम देखिबा ई बजट ना बहुत खासियत अछि कोन यू नो ई बजट र खासियत हला कि social welfare जोटा अछि हमर हला जोतरे कि बेसिकली चाइल्ड और वुमेन एम्पावरमेंट हला वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड को समान मेनली फोकस करछन वुमेन और चाइल्ड को कोन पे बिकॉज़ यू नो द वेरी फ्यूचर ऑफ ए कंट्री इज रेस्ट ऑन दिस टू सेगमेंट्स राइट लेट अस नो highlighting the key social welfare initiatives our chief minister identifies near 6 lakh eligible beneficiaries were currently provided pensions benefit under the madhu babu pension yojana अच्छा या परे जदि मु कहबी कि वुमेन एटा हला परे वर्तमान सीनियर सिटीजन प्रथमे जो माने तंकर जीवन रो यू नो बहुत दे हैव लिव्ड ए लास्ट स्पैन ऑफ लाइफ एंड सीनियर सिटीजन्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड टेकन केयर not only in India every country in the world खास करी जदि जापान को एग्जांपल लो सीनियर सिटीजन because their experience has you know like a treasure for any country right treasure तंका experience रु जिंस हमें यूटिलाइज हुई और डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी सो जानिबा कोन मधु बाबू पेंशन योजना एटी भी नोट करो जोडा मो ब्लैक एंड रे करछि ताकू लिखि देबो सब हैला मन रखो 100% हमर प्रीलिम्स रे इशू जिंस तमर कवर हो 100% आई एम टेलिंग दैट वन बिकॉज़ आई नो द डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस यू नो फॉर ए जो जिंस प्रिपेयर करे इट टुक्स आवर्स एंड एज डेज फॉर रीचिंग दिस वंस हैला इत्ते वास्ट जिंस अछि ताकू कंसाइज करी कैन इट इज इन अ वेरी डिसिपेटेड वे सो तम मानन को स्पून फीडिंग करा होछ बट ता परे तमे जदि परफॉर्म करूनो देन इट इज यू नो फॉल्ट लाइज विथ योर एफर्ट एंड योर इंटरेस्ट हैला सो डेडिकेटेडली करो डेडिकेशन बिना किछि भी होबो गछ लगाउछो भलो भाबे लगा निश्चय फल पड़िबो सो मधु पेंशन योजना कोन रहला एंड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एटा रहला then which together cover around 57 lakh beneficiaries in the state can you imagine इत्ते बड़ गोटे ड्राइव हम स्टेट रे निहाई 57 lakh beneficiaries पे कवर करा होछ मधु बाबू पेंशन योजना and the national your social assistance program however agu jiba however the state government is committed to ensure situations cover hela ensure the situation coverage under the madhu babu pension yojana and would bring all eligible beneficiaries hela jette be eligible beneficiaries achanti under the scheme the cm has kon karchanti the cm has vote mane pratigya nechandi to ensure justice especially to the elderly and vulnerable citizens those who have left out any reason ए जिनसरा कोन माने जो माने लेफ्ट आउट हे चंती धर कोन से कारण वसत आइदर से माने से स्कीम टाको से माने आइडेंटिफाई करि पाना और जानि न तंकर इंफॉर्मेशन नाही और गवर्नमेंट पेपर प्रोसेसिंग रे सेटा लेफ्ट आउट हे छि जो माने बंची छि लाख्स ऑफ पीपल अछन सेमान को भी कोन अछि हमर माननीय मुख्यमंत्री ही हैज कमिटेड ही हैज वोट to facilitate the service जो माने भी रही है so this is such a nice you know pension scheme that you know to making an security to our senior citizens काहे ना बुढ़ा वाले मनुष्य बहुत ही insecure feel करे because loneliness feel करे so regarding money is very much needed for their safety of their health security system नहीं so that is what you know caring towards it economically caring towards your senior citizens हैला senior citizens मुइटा कोन पे कहली निजे जतले तुम सोसाइटी जोटा आसीबो मेंस पेपर रे हैला पेपर 1 रे अछि मेंस रे आउ इकोनॉमी रे पेपर 3 रे एटा मार्क करनिया मेंस पे प्रीलिम्स तो डेफिनेटली एटा बहुत इंपोर्टेंट अच्छा कोन भाई मन लेक्चर सर 1000 crore फॉर पूरी डिजिटल हुंडी प्रमोद उद्यान अमर मठ बिग लाइब्रेरी इट्स वेरी गुड प्रोजेक्ट ओके मधुआ पंजरी यस वेरी गुड जापान गवर्नमेंट कहि पॉपुलेशन ग्रोथ करो से समस्त को डाकी के एम्प्लॉयमेंट दोचने मैरिज करिके सेठी यस वेरी नाइस जापान इज यू नो फेसिंग द you know population crisis aging population so because of japan re jo youths mane they are you know avoiding your reproduction because of your you know your responsibility social family career chona responsibility only for you know money kamebe au mane
money कमेबा और निजर कैरियर प्रोफेशन सो दैट्स नॉट एन ऑल टोटल लाइफ लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट मनी लाइफ रे सब जिंस बैलेंस होबा दरकार ओके आगु जीवा सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल वेलफेयर हम जानले ए पार्ट टा गला हमर सीनियर सिटीजन्स ऊपर नै हला सीनियर सिटीजन नाउ कम्स टू द नेक्स्ट चलची लाइवलीहुड सोशल वेलफेयर चलची हला सेक्टर टा ए सेक्टर टा गुटे सेपरेट गुटे नोट करिक रख सोशल वेलफेयर लाइवलीहुड रे कोन देखिबा माने रोजगार रे चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव दैट इज डालखाई नेम्ड हला न्यू इनिशिएटिव नेले डालखाई जदि कोन वर्सन रा डिग्निफाइड एक्सेस टू लाइवलीहुड नॉलेज हेल्थ एंड अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज योर डालखाई बहुत सुंदर जिनसडा ओके एम्ड एट योर एलिमिनेटिंग बॉन्डेड लेबर सिस्टम हमर ओडिसा रे जोटा अछि बॉन्डेड लेबर सिस्टम सेटा को एलिमिनेट कंप्लीट करबे कोन बॉन्डेड लेबर आज का डेट रे जदि देखियो स्टिल ओडिसा रु दादन खटिया पे लोक माने जाउछन बाहर स्टेट को माने इफ यू सी द गुजरात यू नो मुंबई महाराष्ट्र न्यू दिल्ली हला सब जगह को माने सेपरेट काहे की जाउछन बिकॉज़ हमर एठी यू नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यू नो दैट इज अ लैकिंग सो टाकू कमिट करी के मुख्यमंत्री कोन करछन एलिमिनेटिंग द बॉन्डेड लेबर सिस्टम लोकली रेफर टू अस दादन जोटा के हमें को मैक्सिमम तुम देखियो जदि केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर मैक्सिमम दे आर गोइंग टू द outside creating a sustainable livelihood opportunities through coordination efforts among the multiple government departments so ee jo jinsara rochi you know creating the infrastructure कौन से क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखिबे यदि दादन खटिया पे जाउछथि काहे कि हम ओडिया भाई मानन को एटी तांकर निजर यू नो मन मुताबिक एटी तांको काम मिलुनी से माने काहे कि जाई कि सूरत रे घर किनी सेठी रहउछथि काहे कि से माने जाई कि गुजरात रे बडोदरा रे से माने रहउछथि काहे कि जाई कि अहमदाबाद रे से माने खटुछथि यू नो होटल सो सेही जो वर्तमान गवर्नमेंट एटा गोटे इंक्लूसिव ग्रोथ करछ से जो द आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज एड्रेस्ड द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू लुक इनटू सच केमते हम क्रिएट करि परबा opportunities okay that has to be seriously dealt with through the you know dalkhai yojana man rakho eta very important this one हाँ प्रदीप तले कुछ कि सर गंजाम साइड रो बेसी वेस्टर्न साइड रो भी बेसी लोग जाउछ बिल्कुल बिल्कुल गंजाम वेस्टर्न साइड रो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि उपकूलवर्ती के केवल फोकस करिवार नुह गवर्नमेंट के योजना अछि पूरा एंटायर ओडिसा वेदर इज वेस्टर्न ओडिसा हो कि हमर जदी देखिबो केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर भी बहुत लोग जाती ओके एंड प्लस साउदर्न ओडिसा सो ऑल टोटल ओके यू नो गोटे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा कि क्रिएट हेले जाई कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो आगु को बढ़िया पुनी अगेन द स्टेट will also supplement central funds to you know for employment guarantee for 125 days मन रख 125 दिन पई करा हबो अंडर your VBG रामजी स्कीम कोन विकसित भारत लेखिनियो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण कोन एटा हला एक्चुअली यदि तमे देखियो मनरेगा जो आगुरु थिला महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ताकू रिप्लेस कला ई बीबीजी रामजी विकसित भारत योर गारंटी रोजगार फॉर आजीविका मिशन ग्रामीण हैला विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एटी मु लिखि दोची विकसित भारत हैला विकसित भारत एटा टिके बडो अछि हैला किंतु मन रखिया पड़ियो गारंटी ठीक अछि गारंटी फॉर एटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण हैला आजीविका मिशन ग्रामीण सो एटा हैला तमरो मेन यार टोटल बीबीजी रामजी रो हैला मन रख मनरेगा को एटा को रिप्लेसमेंट करा है मनरेगा एक्ट को वर्तमान इट विल काउंटेड एज परीक्षा एटा बहुत इंपोर्टेंट पचारिया पे हैला विकसित भारत आप मे बी देयर आस्क इनटू यू नो द एब्रिविएशंस यू हैव टू फाइंड दैट वन तुमको एटा टोटल फुल फॉर्म रे तुमको देखिया पड़ियो सो एको नोट करनी सो दिस फंड कोन एलोकेट पाखा पाखी 5600 कोटी टका अप्रोक्सीमेट 600 कोटी टका टू प्रमोट रूरल एंड एग्रीकल्चर एडवांसमेंट पई दिया हला 5600 कोटी टका migrant labor is not a bonded labor of course they are not the bonded labor migrant labor but with the due course of time they becoming turn into the you know the jodi am seta dekhiba ki your human geography there are terms achi ki with the passage of time when they habituated with that up they accept that one that is you know called psychologically they are bonded labor right bbj ram yes very good Pradip okay next hame dekhiba kon so they focused quote re kale समृद्ध अंगनवाड़ी योजना देखो माने रूट लेवल गवर्नमेंट केंते काम करते समृद्ध अंगनवाड़ी योजना
जो कि 635 crore अंगनवाड़ी योजना वर्तमान ओडिसा रे बहुत बढ़िया पूरा ऑल इंडिया तो जहाँ करी ओडिसा रे बहुत बढ़िया रिजल्ट आछी धीरे धीरे देख आमे केबे खाली क्रिटिक्स कल हबनी कि एटा हलानी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ एमती हेबातला सेमती इट डजंट सफाइस जो माने रूट लेवल काम करूछन से माने जानि छन सोशल वर्कर माने हाउ इट इज पेनफुल we have to encourage the people so society रे गोटे जिंस ना धीरे धीरे percolate हुए you cannot expect that Rome can build overnight कौन सी जिंस के overnight रे it takes times so that is what the perseverance is very important factor to build such things right perseverance माने patience और perseverance दीटा जन कहीं करी पड़ियो so वर्तमान अंगनवाड़ी जो लेखा लाई समृद्ध अंगनवाड़ी योजना काहे गवर्नमेंट स्पेंड करछ पाखा पाखी 600 650 कोटी टका 635 कोटी काहे why because the strength lies there you know to people है ग्रामीण विकास इतरे रहइबो कोन रहइबो फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइज द चाइल्ड केयर है अंगनवाड़ी जो मॉडर्नाइज द चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटीज अंगनवाड़ी एंड उद्यमी प्रमोशन फॉर सिग्नल नानो एंटरप्रेन्योर्स फॉर एग्जांपल कहबी आज हमें जो एते खुशी होचंदी इंडिया इज डिक्लाइंड एज एन यू नो द पोलियो मुक्त भारत व्हाई इट कम्स बिकॉज़ दिस प्रोसेस ए अंगनवाड़ी प्रोसेस रे ए सहायता कर्मी माने द वॉलंटियर्स द सोशल वर्कर्स they got involved एई माने ही गां रे छोटो छोटो छुआ को फैमिली को कन्विंस करी कि मां मान को कन्विंस करी कि छुआ को आनी कि पोलियो देले अदरवाइज इट कुड नॉट हैव पॉसिबल फॉर इंडिया लाइक सच एन वास्ट पॉपुलेशंस दैट टू पोलियो मुक्त भारत सेकंड थिंग आज पोषण अभियान स्कीम जो हमर चलची सेटा केमती रहइबो माल न्यूट्रिशन को हम डील करिवा दिस इज टू द अंगनवाड़ी मन रखो मेंस रे गोडा 100% इस क्वेश्चन तुम पचारि and plus prelims रे तमर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सो बुझो भला सुनो मन देकी गुडा सो केमति रहला जदि मु कहली दीटा स्कीम्स कोन गोटे हला तमरो पोषण अभियान पोषण मुक्त हला पोषण अभियान आ गोटे हला तमरो योर पोलियो मुक्त भारत पोलियो फ्री इंडिया हला पोलियो फ्री इंडिया अच्छा ए दीटा ऊपर को नेक मु डिस्कस करछि एटा ऑलरेडी इंडिया अचीव करछि पोलियो फ्री इंडिया केमति हला आरी थ्रू सोशल वर्कर्स एंड द यू नो वॉलंटियर्स से माने जाई कि घरे बुली बुली डाकी कले आमे तो अर्बन सिटी रहलो एसी चलो रहलो किछि नै वी नो द यू डू नॉट एबल टू रियलाइज द पेन बट एक्चुअली इंडिया रिसाइड्स इन विलेजेस व्हाई बिकॉज़ 64% ऑफ इंडिया स्टिल रिसाइड इन योर विलेजेस काहे कि वर्तमान 36% टू 37% इंडिया इज अर्बनाइज्ड माने मोर देन माने देखियो नियर अबाउट 65% इंडिया वर्तमान बी विलेज रे सो वर्तमान हमें सेमती रो सब अर्बन करिवो धीरे धीरे एई जानला पर तुम देखिवो कि चाइना भलिया इंडिया भी ता विलेज बडा को भी अर्बनाइज कर दो माने हाईली यू नो मल्टीफैसेटेड कर दो टेक्नोलॉजिकल लेट अस नो अच्छा एटा गोटे गला पोषण अभियान कोन हो इंडिया इज स्ट्रगलिंग विद द माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम माल न्यूट्रिशन माने पोषण अभियान माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम में कोन रहउछ माल न्यूट्रिशन रे पिल्ला को यू नो स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड जदि गोटे चाइल्ड स्टंटेड ग्रोथ हला दुर्बलिया हला तार देश भी दुर्बलिया हो now the question is that how malnutrition कौन करे you know it gives you know suppose I am talking about the magnesium suppose I am talking about the proteins I am talking about the carbohydrates protein and carbohydrates हला proteins कौन करे body building रे carbohydrate energy दी so body building और energy जदि हमको मिली रहनी ताले growth कौन होबो ब्रेन कौन ग्रोथ होबो ना मसल कौन ग्रोथ होबो ना जदि कौन बिकॉज़ ह्यूमन कैपिटल आर द एसेट ऑफ ए कंट्री सेही माने ही काम करंते जदि गोटे छोटो छुआ आरंभ रु जदि सेबुडा बढ़ुची जदि माल न्यूट्रिशन होउची देन हाउ इट इज पॉसिबल फॉर द कंट्री टू ग्रो दैट इज व्हाट इज देखो यार माने मु तुमको हमें ताको डिकोड करछु कोन इस स्कीम रो कोन व्हाट इज द हिडन फैक्टर दैट हैज बीन केप्ट तो से जिनसटा कि अंगनवाड़ी स्कीम्स गवर्नमेंट देछि समृद्ध अंगनवाड़ी योजना फॉर दैट गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग अबाउट 635 crore for the you know the to energize or I mean or accelerate the nutritional process that is special focus to the khali children lactating mother and the pregnant women mainly kon jehetu body re women sangar gote ma sangar chuata bi bodu tay taku khadyo darkar so lactating mothers and also jetale स्तनपान करे छोटो छुआ हला से समय कोन बॉडी रे गोटे मां पर बहुत प्रेशर पड़े से जो यू नो न्यूट्रियस फूड इज वेरी मच एसेंशियल एंड गवर्नमेंट कैन रिच कोन आइडेंटिफाई कला दिस इज द अंगनवाड़ी where the government can reach or fulfill its objective that is your पोषण अभियान स्कीम रे मन को लेखिनी एगुडा पोषण अभियान रे एटा बहुत बडा गोटे गवर्नमेंट रो स्टेप्स गोटे निहाई नेक्स्ट कम टू द पुनी आसे हम डाइरेक्ट में आसीबा वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ठीक अछि बुझियला समस्त को नेक्स्ट इन दिस बजट द वुमेन एंड द चाइल्ड वेलफेयर वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर दे हैव रिसीव्ड स्ट्रांग फोकस with
with an budget of 16,150 crore for the women and the child development department, that mission Shakti under pakapaki 2,800 कोटी टंका mission Shakti. Very good, very good. बिल्कुल 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 माँ क्षीर ही मेन छुआ ही बढ़िया ही मेन ताकत दियो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है बर्तमान आसो आम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर रे सो पाखापाखि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पाखापाखि रहिला मिशन शक्ति एटी लिखिनि समस्ते खाता पेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू सिट विथ पेन एंड पेपर दैट विल हेल्पफुल मन रखो प्रिलिम्स रे मेंस रे इंटरव्यू रे सब जिंस रे अच्छा मिशन शक्ति बर्तमान हम आसले कोन मिशन शक्ति को द चीफ मिनिस्टर फॉर द अनाउंस द लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव दैट इज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना बहुत बढ़िया आमर जो जिनटा को मैडम निर्मला सीतारमन भी अप्रिशिएट कर एटा गोटे बहुत वेरी वेरी रिसेंट न्यूज तुमको दूसरी मैडम निर्मला सीतारमन और इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर सी हैज प्रेज्ड द स्टेप ऑफ ओडिशा है देखो क्रिटिक्स तो अच्छी हाँ डबल इंजिन सरकार हाँ तमें तो इट्स नॉट अबाउट दैट वन इट सब जिन इंडिया स्वाधीनता है आज 77-78 वर्ष है आम हठात सब जिन पाई जाए ना ओके इट टुक्स टाइम्स हमको सेटा बुझिया को हम ठीक अच्छे आ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना कौन अंडर विच द फाइनेंशियल सेविंग्स पाखापाखि कौन रहिबो सुमंगल योजना गोटे झील छोट छुआ जन्म हो झील छुआटे कन्या है 20,000 तार डिपोजिट हम सी जो तार ग्रेजुएशन पास करिवो ताको लाख टका मिलियो कितने सुंदर प्रोग्राम दो जोटा कि तार भविष्य काम दो पढ़ारे हो कि तार कोडी किछ काम धंदा आरंभ कला सेल्फ हेल्प ग्रुप रे माने से ये रे सब जिंस तार कर हबो लाइवलीहुड पई इतने सुंदर गोटे थॉट प्रोसेस कराई 2000 rupees will be created in the name of girl child born into the economically weaker family देखो everyone is not a silver spoon fed जो माने समस्त जन्म होइछन इट इज नॉट दैट एवरीवन इज silver spoon fed समस्त रूपा चामच नहीं कि सुना चामच नहीं कि जन्म होइनाती माने जदि मु कहबी कि राहुल गांधी जी को बड़े राइट एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल इन द लाइफ सो दैट इज व्हाट ए जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना दैट इज एन वेरी वाइब्रेंट गोटे पार्ट इटा जो 20,000 पुनी जमा करा गोटे छोटे झियो छुआ जन्म होची एंड फॉर ए गर्ल चाइल्ड इनटू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नाउ द क्वेश्चन इज दैट economically part discuss now the question is that why the girl child, why not a boy child? Because to encourage the born of girl child or safeguard and discourage the female foeticide मन रखो कौन करिया पे to discourage the female foeticide हैला female foeticide हैला foeticide कौन पे जो भ्रूण हत्या होची खास करके आज भी जदि भ्रूण हत्या करिवो इट्स एन क्राइम गोटे डॉक्टर मानकर 5 वर्ष 5 वर्ष पई से मानकर सस्पेंड कराउ मेडिकल काउंसिल रु प्लस हेवी जोरिमाना because girls is basically girl child they are the savior of the country savior of the nation that is what the thought behind this one yes Padita okay next हमें देखा कि next कौन this scheme also provides for the financial assistance up to 1.1 lakh okay upon the completion of her graduation subject to eligibility condition जेतले गोटे झियोटे पास करूची ग्रेजुएशन सेतले कोन होबो ताकू लाख टका मिलियो सो एटा हला मेन मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना लेखिनी नेक्स्ट पुनी आगो जिबा नाउ कम टू द एजुकेशन को जदि हमें जिबा in education and skill development for new universities है सो सोशल एम्पावरमेंट रे हमें देखिले दिस इज ठीक अछि सोशल वेलफेयर हमें देखले लाइवलीहुड देखले देन वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर देखले हैला तो वर्तमान हमें आसीबा एजुकेशन जो देखबा इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर न्यू यूनिवर्सिटीज विल एस्टैब्लिश पाखापाखि हैला चारिटा न्यू यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश कराइछि दैट इज वन इज को जगह रे केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एंड झारसुगुड़ा एटी देखो गवर्नमेंट हैज मेंटेन एंड इक्विटेबल अप्रोच पश्चिम ओडिशा प्लस पूर्व ओडिशा को मिसे की निहाई कौन ऑलरेडी केंद्रापड़ा जगत बिकॉज वेरी डेंस पॉपुलेटेड जदि इफ यू सी द प्रीवियस अनडिवाइडेड कटक केंद्रापड़ा एंड जगतसिंहपुर हैला कटक जो माने अनडिवाइडेड थे से माने मैक्सिमम तमे देखियो पॉपुलेशंस पई को हाउ केबे भी एटा भाबनी कि गवर्नमेंट उपकुड़ नहीं मैक्सिमम सब बेले गवर्नमेंट केतले निए गोटे एठी तुमको बुझेई दोछु अनफेयर डिसीजन निए हैला सेटा हम सब बेले भाबु क्रिटिक्स माने भाबंते अनफेयर नो इट्स एन फेयर डिसीजन बैलेंस डिसीजन निए कौन पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर केते लोक अछन से अनुसार से माने जो तांकर प्रोग्राम स्कीम्स को लॉन्च करन से एरिया मन रखो टेक ए नोट ऑफ दिस पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर माने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन
हैला सो कोड कोड रहला केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एंड झारसुगुड़ा raising the total number of universities in our state, that is 21, like other states jodi hum dekho Odisha also focus increasing the university. That means we are imparting hela maximum stress focus on the education. Again new government engineering colleges, Ayush medical colleges, Ayush ro hela ayurvedic upare ayurveda unani upare focus kara hochi. Veterinary, agriculture and fisheries colleges also announced. Sabu jagar eta haba, right? Next tourism है बर्तमान आस एजुकेशन गला सो बर्तमान जदि आमे देखिबा कि स्टिल पुनी एथि गोटे जिन कहबी ओडिशा गवर्नमेंट को आहुरी बढ़िया अछि काहे कि इंडियन बजट रे मु डिस्कस करतली कि स्टिल वी हैव एन टारगेट ऑफ 6% of the total budget that should be spent in the education, but ए जो इंडियन बजट हमर कोन इट इज नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 3% or 3 point something 3% पाखा पाखी हमर बजट स्टिल वी आर लैगिंग. So also in Odisha so education आहुरी स्ट्रांग करिया दरकार बिकॉज़ मन रख आज जापान एथि पई डेवलप बिकॉज़ से मानकर एजुकेशन टीचर्स मान को सब प्रायोरिटी दिया हुए जोटा कि इंडिया रे आगुरु नथिला. जदि आमे देखिबा 10 वर्ष 15 वर्ष पूर्व हम बजट रो ओनली 1.2% जाउतला वर्तमान सेटा बढ़ी कि 3 गुण हे गलानी आहुरी दरकार आहुरी डबल हवा दरकार. दोन ओनली रूट लेवल रे गवर्नमेंट जो हमर कंट्री रा ग्रोथ रा हमर कंक्रीटाइज हो अदरवाइज इट इज वेरी नॉट पॉसिबल. आ मन रख सब बड़े जापान रा एग्जांपल हम नबा. नेक्स्ट कम टू द टूरिज्म हैला. अच्छा इन टूरिज्म सेक्टर allocations rose to 25% पाखापाखी 1023 कोटी टका टूरिज्म सेक्टर रे निहाइछ कोन with major projects including 804 पाखापाखी 800 कोटी टका रे निहाइछ in a world class museum in Bhubaneswar and marine aquarium in Puri. कोन riverfront development along the 5 location, that is 500 crore tourism land bank create 2500 hotel rooms 2047. आ पर आहुरी इंटरेस्टिंग अछि मेन हैला एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एंड पोर्ट्स कमर्शियल पार्ट हम लास्ट को रखी छी हैला काहे कि सेतर बहुत सारा एनालिसिस अछि. स्टे विथ मी और लेख हैला बी पेशेंट एनफ कोन सो हमें जानले कि गवर्नमेंट काहे कि टूरिज्म सेक्टर को छी दिस एन पोटेंशियल सेक्टर. टूरिज्म इज बेसिकली सर्विसेज इंडस्ट्री जेतर आसी सर्विसेज इंडस्ट्रीज काउंटेड एज सर्विस एंड इंडस्ट्री हैज which has tremendous potential to generate revenue, employment लेकिन कौन पाई एटा को गवर्नमेंट मेनली फोकस को टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मन रख रेवेन्यू जनरेट करबा परे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इते टूरिज्म सेक्टर कराउ. फॉर एग्जांपल्स मो निज कथा म कहूछ बहुत जगह रे माने जे बुलिबार माने हाय गोटे फॉर टू ग्लोरीफाई द नेचर को. सो मो बहुत जगह इको टूरिज्म जाए. इको टूरिज्म मोर वेरी नियरेस्ट मो कहूछ खोरदार एठी मंगला जोड़ी अछि मंगला जोड़ी तुम जानि से गां रे इत्ते सुंदर से माने आई हैव बीन देयर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स मोर ऊपर को जाय से गां जाए धीरे धीरे देखो माटी रास्ता तला बर्तमान पूरा कंक्रीट रोड से माने सिटी एंगेज हेचन गवर्नमेंट इको टूरिज्म सेंटर खोलची. यूथ्स माने पाठ पढी कि तांकर गोटे छोट छोट खोल देलेनी तांकर टूरिज्म पई तांकर बोट गोटे डंगा नि आसलेनी ता संग तांकर सेंटर खोल देलेनी गाइड करिया पे से माने गाइड भी होचन पाठ पढुचन प्लस खाइबा पई भी जोगाड़ करचन. दैट इज एन ईयर राउंड से माने को माने तांको बेनिफिट मिलुची सीजनल तो आहुरी बेसी पैसा से माने रोजगार कर. So that is what called the essence of entrepreneurship जोटा कि गवर्नमेंट वर्तमान कहूची सेल्फ रिलायंट भारत थ्रू द टूरिज्म सेक्टर और द टूरिज्म is an very important tool. आगु जिबा इको टूरिज्म सेंटर्स आल्सो रेस्टोरेशन चिल्का लेक एंड द नंदनकानन जू आर आल्सो प्रायोरिटाइज. चिल्का लेक और नंदनकानन जू भी प्रायोरिटाइज करा है. चिल्का लेक रो डेवलपमेंट पई सलीट मद्रास हेल्प करिवो एंड बीबीएसआर एंड कटक डेवलपमेंट पई भी खड़गपुर बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया प्रतियोगिता वेरी नाइस. एबे हम टूरिज्म डिपार्टमेंट रा बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत जगह इंडिया को एटा बहुत टूरिज्म सेक्टर को मन रखो एटी गोटे मेंस रो डेफिनेटली क्वेश्चंस इन मेंस तमर आसीबो मेंस आउ प्रीलिम्स रे मेंस डेफिनेटली आल्सो द प्रीलिम्स रे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तमर आसीबो डेफिनेटली हला कीप ए नोट ऑफ दिस. आगु जिबा पुनी नाउ कम टू द रूरल डेवलपमेंट. दीटा जिनस रूरल डेवलपमेंट अच्छी देन एग्रीकल्चर है बहुत सारा आज अच्छी आम कवर करवा पेशेंस रख जानिया पे है कौन देखिए रूरल डेवलपमेंट सेक्टर टा वर्तमान जदि कहब
कि विकसित भारत जोटा अच्छी सेमती विकसित ओडिशा rural development sector plays a very significant role for the overall development and the economical growth of the state and the country as well. Note करिए बर्तमान कौन गवर्नमेंट फोकस कला रूरल डेवलपमेंट टू एम्पावर द रूरल सेक्टर द चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैड लॉन्च मिशन पावर कौन मिशन पावर नोट करो एटा गोटे क्वेश्चन मिशन पावर रे पावर ड्रिंकिंग वाटर एंड लास्ट माइल रोड कनेक्टिविटी मिशन पावर जेमती मिशन शक्ति आसला सेपटे हला एम्पावरमेंट रे वुमेन एम्पावरमेंट रे हला एटी कोन आसला रूरल डेवलपमेंट रे मिशन पावर रे कौन रहिला पावर ड्रिंकिंग वाटर and rural road connectivity. Now the question is that why rural connectivity? Yes, transportation do have very much important role in connecting or generating your economy or growth of the economy. Growth of the economy की करिया पे transport रो बहुत बड़ा रोल काहेकि धर गोटे चासी धर मु चासी हेली मु एठी मोर मोर खेत रे गां रे मु धर बाइगण टमाटर कोबी एगुडा सब मु कली और प्लस फ्रूट्स भी सपोज सेगुडा को मु नहीं दिस आर कॉल्ड द पेरिसेबल आइटम्स धर 24 घंटा भीतर एटा बिक्री हेलानी ता परदिन सड़ी जी सो फॉर दैट योर कंक्रीट रोड और इनपुट और जदि हमें देखिबा कि प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी टू द अर्बन ट्रांसपोर्ट और द कोल्ड स्टोरेज पई बहुत इंपोर्टेंट सेटा देन ओनली फार्मर कैन मिनिमाइज हिज लॉस एंड मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस सो कौन डिक्लेयर टू डिलीवर द सड़क बिजली एंड पानी सड़क बिजली और पानी टू एवरीवन to every revenue village by 2027 on the principles of speed scale and standard कितने सुंदर योजना देख कौन इतने गवर्नमेंट करूची सड़क बिजली एंड पानी सबको चाहिए विकसित भारत खाली एमती कहि देले मोर अपन ता पे रूट लेवल काम करे पड़े आज भी कुछ अर्बन सेंटर इज ऑलरेडी डेवलप्ड नथिंग रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली बट विलेज ही रही नहीं माने स्टिल इंडिया को गोल से हैव्स टू गो इन ट्रेमेंडस एना वर्तमान मेहनत करके पड़ियो then only we can reach the विकसित भारत कौन से 2026-27 सुधा जेतिक रेवेन्यू विलेज अच्छी तांको कौन दिया हला सड़क बिजली पानी समस्त को घरे घर घरे गवर्नमेंट योजना करछि जेमति हमर शहर रे सब पानी टैप आछि सेमति गां रे भी जी they do not have to depend excuse me they do not have to depend on the river water pond or the hand pumps right that is what the vision of the government our state government and the central government as well की allocation कौन rural development budget रे पाखापाखि 44,309 कोटी टंका ओवरऑल फॉर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स व्हिच इज 13% इंक्रीज देन द प्रीवियस हैला नोट करा एटा से पाखापाखि हैला रूरल डेवलपमेंट में पाखापाखि 44,000 देखो प्रीलिम्स रे बेले बेले से माने फिगर पचारि दोछन सो टिके हमको सेटा टिके कॉन्शियस होबो पड़ियो सेकंड रे पाखापाखि 3,491 crore अंडर मुख्यमंत्री सड़क योजना that is and 2,050 crore under सेतु बंधन योजना मुख्यमंत्री सड़क योजना सेतु बंधन योजना रे एटा हमको भी इतरे की एलोकेशंस अछि पाखापाखि 3,500 कोटी टका अप्रोक्सीमेट a new scheme that connectivity to the unconnected habitations बहुत इंपोर्टेंट एटा हैला that is connectivity to unconnected habitations that is having allocations of 1,000 crore हैला ता माने hinterland talks about the hinterland collection ला एमती कनेक्शन अच्छी जेमती hinterland कनेक्शन जेमती मु कहबी सिमलीपाल रे मुने किस दिन दिमाग तळे जाइतले हमें सब माने एमती विजिट रे हैला नेचर विजिट तो वी वेंट टू दैट इज बारही पानी वाटरफॉल जो भी भीतर माने सिटी पाखरु 40 किलोमीटर भीतर घंच जंगल भीतर बारही पानी वाटरफॉल सिटी इको टूरिज्म डेवलप कराय तार रूट टा भी गवर्नमेंट डेवलप करछ फॉर एग्जांपल दिस कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस बेसिकली इन द रिमोट लोकेशन कोडी बेसिकली द रिमोट लोकेशन जोटा कि हमें कहबा hinterland बेसिकली कहै द ट्रेजर हाउस ऑफ टूरिज्म हैला फॉर एग्जांपल्स मु देली कोन बरही पानी ब्लॉक कोडी बरही पानी ब्लॉक इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे बरही पानी ब्लॉक इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इतने सुंदर जगह पीसफुल प्योर ऑर्गेनिक एयर सब जिंस सेठी बहुत बढ़िया एटा सब लेखिनी एगुडा सब नेक्स्ट कोन आसला 750 crore फॉर प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना एंड 150 crore फॉर पीएम जनमन वर्क्स नेक्स्ट 2200 कोटी टका कोन देला रूरल रोड मेंटेनेंस में खाली रोड कले हमन तार मेंटेनेंस प्रति वर्ष दरकार रास्ता भी खराब हुए वर्ष 2 वर्ष पर पुणी खराब हो ताकू मेंटेन ता पय केते 2200 कोटी टका जस्ट सी द गवर्नमेंट विजन
RS 360 कोटी टंका अंडर बीजू ग्राम ज्योति योजना फॉर लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेशन को पुणी मेंटेनेंस करिया पड़े बिजली क्षेत्र कोन अछि बीजू ग्राम ज्योति योजना पाखापाखि 360 कोटी टंका अप्रोक्सीमेट दिया है 2000 कोटी टंका कोटी दियाला विकसित गांव विकसित ओडिशा से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स रे वी आर जेतु डबल इंजन सरकार अछि खाली कहले हबनी बट वी जेतु हमें वी आर यू नो जदि हमें देखिबा कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स बेसिंग ऑन दैट यू नो रेस्पेक्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप विकसित ओडिशा हला एडी लिखले विकसित गांव विकसित ओडिशा हला सेंट्रल गवर्नमेंट थेम को नेकी सो बीजीबीओ एटा मन रख लिखिनियो बीजीबीओ डेवलप सिविक एसेट स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड माइक्रो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित गांव विकसित ओडिशा यस 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 बारहेपाणी वाटरफॉल जो हम देखिबा इंडिया रे एटा सेकंड लॉन्गेस्ट वाटरफॉल आफ्टर कुंचिकल वाटरफॉल लिखिनियो बारहेपाणी जोटा हम कहली हला बारहेपाणी वाटरफॉल जोटा अछि सेठी सेटा हला सेकंड लॉन्गेस्ट वाटरफॉल वो इंडिया रे सेकंड लॉन्गेस्ट वाटरफॉल पाखापाखि केते 400 हला 400 मीटर पाखापाखि तार उच्चता पाखापाखि 450 हला 460 मीटर पाखापाखि 460 मीटर पाखापाखि अछि सेकंड फास्ट की अछि कुंचिकल वाटरफॉल इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक सेकंड हमर ओडिशा अछि हला मयूरभंज लेकिन बारहेपाणी वाटरफॉल एटा गोटे प्रीलिम्स रे क्वेश्चंस अच्छा पुनी आगु जिबा 150 कोर देला मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन 2.0 टारगेटिंग 1.6 लाख ट्राइबल हाउसेस इन 2026-7 दैट इज अबाउट 8 लाख फैमिलीज तो हम देखिबा देखो इतरे भी गवर्नमेंट रे कितने बढ़िया मुख्यमंत्री जनजाति जीविका माने जदि हम देखिबा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स दे आर बेसिकली यू नो यू आर नेचुरल आवर नेचुरल प्रोटेक्टर और आवर नेचुरल गार्जियन से मान को पाई ही हमर जंगल सुरक्षित होकी अछि जदि जंगल डिस्ट्रॉय हो आमे भी इटी भीतर जळि दिसु you know the raging scorching heat and the raging temperature that is because of you know abruptly rising of temperature world ro average temperature वर्तमान 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ी गला कैन यू इमेजिन से जुग तो आज सेमती ग्लेशियर मेल्ट होची समुद्र पानी बढ़ी जाउची हला जंगल ने निया लागि जाउची that is what the devastation so tribes are the natural protector natural guardian of our forest that is why government काहे सबले मन थॉट प्रोसेस या पछर गवर्नमेंट काहे इन्वेस्ट कला कोन आ पछर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस यू हैव टू फाइंड आउट लिखला बडे जिंसोडा को बाय हार्टली जिंसोडा को सब मन रख so targeting 1.6 lakh tribal households in 2026 and 27 next पाखापाखि 326 कोटी टंका कोड दिया होची धरित्री आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान हला एटा धरित्री एटा भी बहुत इंपोर्टेंट धरित्री आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना आज भी जदि देखियो तुम मैक्सिमम वेस्टर्न ओडिशा और सदर्न ओडिशा और नॉर्दर्न ओडिशा रे मैक्सिमम तुम देखियो योर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एंड ओडिशा इज among the rank holders of tribal population second rank रे हमर अछि आफ्टर मध्य प्रदेश ओके ठीक अछि ठीक अपडेट देखि नबो वर्तमान आई थिंक इट इज सेकंड रैंक सो लास्ट रूरल डेवलपमेंट रो पॉइंट है पाखापाखि 7000 कोटी टंका अंडर द जल जीवन मिशन पाखापाखि जल जीवन मिशन स्कीम रे पानी पई 7000 कोटी टंका स्टेट गवर्नमेंट देले देन नियर अबाउट 1500 कोटी टंका वसुधा हेलो वसुधा स्कीम्स रे प्लस ए न्यू स्टेट सपोर्ट स्कीम अचीव पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड बाय मार्च 2027 गवर्नमेंट कोन गोटे एम नेची कोन गोल नेचंती मार्च 2027 सुधा हला मार्च 2027 सुधा हला योर पाइप कनेक्शन हला वाटर सप्लाई पाइप वाटर सप्लाई कोन लिखली पाइप वाटर सप्लाई टू रूरल villages or rural गां तमन देखो गवर्नमेंट रो विजन देखो पानी समस्त से माने भी हाइजीन वाटर पाइबर 100% से माने काहे की इन्फेक्टेड हेवे पॉन्ड वाटर रिवर वाटर रो आल्सो की हैंड पंप रो वर्तमान एटा जेंति फॉर एग्जांपल्स मु कहबी नो वेरी रिसेंट जय जगन्नाथ सबु ट्राइब पीबीटीजी अंडर रे जीवन बिल्कुल पीबीटीजी हला जो तमर जदि हम देखबा कि वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ता सब जगह रे नहांती सेटा से माने बॉडी माने सेटा चेंजेस हुए हला पीबीटीजी रे गुडे अलगा क्लास ने भी डोंट वरी हला सो बर्तन हम जदि देखबा कोन पाइप वाटर समस्त को सप्लाई होबो काहे ना फॉर एग्जांपल हां गुडे मु केस स्टडी कहू सुकिंदा एरिया रे हला गुडे एग्जांपल नौ छु मु भला बे सुनो सुकिंदा एरिया जाजपुर रो हला जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे सुकिंदा एरिया रे इट इज बेसिकली कोन हुए क्रोमाइट माइंस हुए क्रोमाइट माइंस ठीक अछि क्रोमाइट माइंस
क्रोमाइट माइंस से देखुଛନ୍ତି कि डायरेक्ट तंका रिवर वाटर जो से चढ़ुଛନ୍ତି जो पर्टिकुलर से एग्रीकल्चर करछନ୍ତି कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर करछନ୍ତି सेठी जाई डायरेक्ट लाल पानी बाहर हाउ बिकॉज माइंस एरिया आसुଛି सो ये जो कंटामिनेशन रोकिबा पाई गवर्नमेंट कोन करछि पाइप रूरल पाइप गुड एग्जांपल देली रूरल वाटर सप्लाई थ्रू पाइप सो दैट विलेजेस कैन नॉट बी अफेक्टेड तुम जान ए जो एग्जांपल देली तुम मारी की देखो एला जर्नल क्रोमाइट हेबादरु सेमानकर किडनी फेलियर होची सेमानकर लिवर सिरोसिस होची सेमानकर हार्ट डिजीज होची इवन मेनी आर अफेक्टेड विथ कैंसर एटा हम नियरेस्ट एटी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे सुकिंदा काहेकि ना क्रोमाइट माइंस को तमे भाबो ओडिसा इज एन सबुठु माने खनि संपद राज्य केते हमर प्रॉब्लम होची समस्त को एटी राइट आगु बढ़िबा नाउ कम टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर यदि देखिबा ओके एग्रीकल्चर सेक्टर यदि हम देखिबा कोन गवर्नमेंट देछि एग्रीकल्चर सेक्टर रे एग्रीकल्चर सेक्टर see agriculture is always an जब economy देखिबा agriculture sector has always an a very specified position for the development of the economy and the question is how एथि पई कि because agriculture India जो economy हैला maximum population they rely still agriculture यदि देखिबो agriculture your the contribution to the GDP is near about 18% 17 to 18% agriculture and maximum people engage कौन खाली तमे भाबनी कि एग्रीकल्चर माने समान खाली गार जे हळ करछथि नो एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एग्रो सेक्टर इंडस्ट्रीज इडी हम कोन बुझिबा टू बी वेरी क्लियर हैला कल्टीवेशन प्लस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तमे नास्तो एग्रो बेस्ड पुनी तमे इंडस्ट्री पुनी जानले पुनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कोन यस इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड जेमति फॉर एग्जांपल तमे कपा चाष कल कॉटन को तमे तापर कोन फैक्ट्री निक ताकू तमे तुळा बाहर करियो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आखु चाष कल आखुर तमे कोन करियो जागरी बाहर करियो गुडो बाहर करियो मोलासेस बाहर करियो ताकू बोले चीनी बनेबू ता पई शुगर मिल दैट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सोरिस को पेडिया पई ताकू दरकार लोक सेटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री दीज आर द एग्जांपल्स दैट मैक्सिमम इंडियन पीपल रिलेटेड इफ यू गो टू द उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सब जगह तमे जिंस करता दैट इज व्हाट आवर इंडिया इज राइट सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिसीव पाखापाखी 42,500 कोटी टंका जस्ट इमेजिन allocation marking a notable increase and underscoring government priority to rural empowerment and the farmer welfare proposal for the development of 100 smart mandis smart farm markets or model mandis to modernize the agriculture marketing system eta gote example mu dochi kon mandis kon se mane farmer manenkar jehetu kheti to minimize the loss of farmers mu kon कहली to minimize the loss of farmers to minimize the loss of farmer मानकर लॉस को मिनिमाइज करबे मंडी करला फॉर एग्जांपल तुमको शेयर करछ इफ यू गो टू न्यू दिल्ली हैला जदी तमे न्यू दिल्ली जीवो सेठी अछि आजादपुर सब्जी मंडी फॉर एग्जांपल मु देली कोन आजादपुर सब्जी मंडी हैला मार दियो आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली रे हैला आजादपुर सब्जी मंडी वो तो मैक्सिमम टाइम दिल्ली रे माने पढ़ारे कटई सेठी मु देखे आजादपुर सब्जी मंडी हम जाउ सेठी किछि न मिले आजादपुर पड़ा मुखर्जी नगर टिके आगु हैला ब्रिटानिया पाखरे मॉडल टाउन आगु गले सिटी पड़े सो आजादपुर कोन पाइबो तमे देखियो फळ जरी किनला को काहे कि जनरली ओडिसा रे से कांसेप्ट काहे कि लागू होला धर गोटे पुअर फार्मर से माने रास्ता कटरे काहे कि बिकिबे तांकर गारो आनी कि सेमान को मंडी कराला मंडी कोन जेमति फॉर एग्जांपल तमे एटी सीडीए पढ़ाओ कि हमर ए महानदीप रे रास्ता कटरे माने सह आसी बिकुचंती पाखा को गारो आसी एंड दैट इज वेरी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स तमे भाबो सेही जिंस जदी गवर्नमेंट गोटे स्ट्रक्चर्ड वे रे कला केते सेमान को लाभ हो केते सेमान सेफ्टी हो केते सेमान तांकर एंथुजियाज्म बढ़िबो प्लस लोक माने भी सेफ्टी जो रास्ता ट्रैफिक जाम हो चाउ सेटा कमी जिवो सो दैट इज व्हाट जो मेन हैला कि फार्मर रा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करबा और लॉस को मिनिमाइज करिया पछरे एटा मेजर योजना जोतिर कि थैंक्स टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द ओडिशा गवर्नमेंट फॉर मेकिंग एंड सच एन डिसाइसिव स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग द मंडीज फॉर द फार्मर्स ओके एटा देखो स्मार्ट फार्मिंग नोट करिक रखो एटा सब एटा बहुत इंपोर्टेंट गुड मॉर्निंग हाउ आर यू बीबीएसआर प्रतिक्रिया नंबर 1 यूनिट 1 रो हट के सेक्रेटरी अछंती ग्रीन बिल्कुल गुड मॉर्निंग
गॉड ब्लेस गुड मॉर्निंग सो आगु बढ़िबा हैला लेकिन एगुडा सब मंडीज रो नेक्स्ट another milestone are Odisha will undertake one of the world's largest grain storage expansion with allocation of 240 crore but now it is a point this point now visualize your cold storage importance of your cold storage रो importance लिखली cold storage रो importance काहेकि गोटे चासी पई cold storage ता बहुत important काहेकि because तार जो भय मिल रहा था अगर मैं इतना मतलब अगर मैं फसल उगाता हूँ जदि जदि मैं इतने माने फसल पैदा करछु माने मो गरुछु जदि सेटा ठीक सड़ी जीवो कोन करबी मु करबी ए डरटा को रोकिया पाई to make him very secure in terms of your his or her productions cold storage government डाले काहे कि maximum फल पची जाए सड़ी जाए maximum परिबा सड़ी जाए so these are called the perishable goods items so cold storage रे कोन हला government जो कहूछ 240 crores I am sure in the coming budget out there next रे ए figure टा आउरी बढ़ी काहे कि ना ओडिसा is 4.55 crore population we have surpassed the Spain रो population to Odisha population cross करी गए so 4.5 कोटी population को पाई definitely cold storage very much important because still farming is our main activities economical activities for the livelihood right thank you Jyoti thank you so much hela next point jiba so it kon expansion allocation 240 crore these initiatives will securely strengthen the food security minimize the post harvest losses and provide better support to the farmers बहुत बड़ा ई जिनसटा better support to the farmers cold storage हैला next encourage the coastal farmers for high value cultivations of crops को पुनी गवर्नमेंट कोन विजुअलाइज करले अच्छा ओके ठीक अछि पुनी कोन कला कोस्टल फार्मर्स मानन पई जेमते केरला रे तमिलनाडु रे आंध्र प्रदेश रे सेबडा कोन कले कोकोनट कैश्यू नट हैला कोकोनट माने नडिया कैश्यू माने तमरो हमरो काजू एंड सैंडलवुड ए सब जिंस एनकरेज करा सैंडलवुड देखियो हैला बेले बेले कोस्टल रो बिहार को देखो रक्त चंदन गोटे अछि जोडा कि कर्नाटक रे इंटीरियर मिले इवन इफ तुम जे देखियो गंजाम साइड रो सेपटे भी कोस्टल पाखरे भी सैंडलवुड भी ग्रो हुए वैरायटी families जदि सैंडलवुड फैमिली देखियो देयर वैरायटी टाइप्स ऑफ सैंडलवुड अछि दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग राइट एटा हला तुम एग्रीकल्चर आसिला कि कोस्टल फॉर द कोस्टल फार्मर्स कोस्टल हला फार्मर कम्युनिटी गवर्नमेंट विजन फॉर द कोस्टल फार्मर कम्युनिटी पई भी गवर्नमेंट फोकस कले ठीक अछि नेक्स्ट कम टू द इंडस्ट्रीज हला आसो इंडस्ट्री को आसले हम कोन देखिबा बहुत इंपोर्टेंट वर्तमान इंडस्ट्री रे वर्तमान देखो हम कोन डिस्कस करबा इंडस्ट्री रे गवर्नमेंट कोन still it is an secondary sector and secondary sector still depends on growth of the industries let's see the state government would align industrial strategy with budgets visions with special emphasis on setting of textile units of cotton growing districts like district like your Balangir Kalahandi and Subarnapur मन रखियोडा जदि हमें देखिबा कॉटन इंडस्ट्री रे पश्चिम ओडिशा आगे रे अछि किए बलांगीर कलाहांडी and सुबर्णपुर माने सोनपुर राइट बिल्कुल 10 crore बिल्कुल विल डिस्कस अबाउट दैट वन रेयर अर्थ ऊपर एटा मासी रेयर अर्थ ठीक अछि बलांगीर कलाहांडी और सोनपुर रे भी कॉटन को समान फार्मर्स वन एनकरेज करिया में कार्बर कल्टीवेशंस को कोन कराला सेठी एन एम्फासिस सेटिंग ऑफ टेक्सटाइल यूनिट्स सेठी कोन हो टेक्सटाइल यूनिट्स इन कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स and promoting district specific industries based on local potential माने भाबो एग्रीकल्चर माने गवर्नमेंट केवल खाली मिनरल को फोकस करनी सबले कोआ जाउछ अलगा ये कि गवर्नमेंट खाली मिनरल को दला नो अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो द एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स को नै कि ता ऊपर नै इंडस्ट्रीज करिया पे दिस बजट हैज प्रायोरिटाइज्ड एंड फोकस्ड वेरी मेटिकुलसली राइट नेक्स्ट he expressed gratitude to the center for announcing Odisha specific initiative including dedicated rare earth corridor ମୁଁ बुझौछ what do you mean by the rare earth corridor में जाडी जेमती aimed at mining processing research capacity building and critical minerals like किए cobalt tungsten vanadium lead critical minerals जिबे which is reduce the import dependence and supporting high tech industries वर्तमान में जानिबा ए rare earth कोन जेमती for examples
मु कहली थोरियम वर्तमान ओडिसा रो पूरा एंटायर जदी देखिबो पूरा बाली रे कोस्टल हमर कोस्टल ये रे थोरियम डिपोजिशन ऑफ थोरियम मोनाजाइट सैंड केरला कहछि कि ओडिसा रे भी पूरा अछि एंटायर जदी तमे देखो दिस एंटायर रेयर अर्थ कॉरिडोर ओडिसा केरला आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एटी कोन अछि मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ थोरियम दिस इज योर थोरियम मु लिखली थोरियम एटी भी थोरियम हमर थोरियम थोरियम हला थोरियम मोनाजाइट सैंड कहीं यूरेनियम तो अधिका थोरियम को कहीं दिया होची नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई कहीं बिकॉज इटा यूरेनियम बलिया हाईली प्रेशराइज्ड प्रेशराइज्ड वाटर रे तक दरकार नहीं प्रेशराइज्ड वाटर सिस्टम को दरकार नहीं ये आराम से नॉर्मल प्रेशराइज्ड वाटर रे बढ़िया काम करे सेकंड एनवायरमेंटली इट इज मच फ्रेंडली इट कैन नॉट इमिट जाइगेंटिक एनर्जी सेटा कोन बहुत तुरंत एनर्जी दिए से जो यूरेनियम को करा होची यूरेनियम इज हाईली हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ but your disintegration is comparably very slow and affecting or contaminating the environment is also drastically lower in comparison to uranium thorium case point to be noted kon dele pressurized heavy pressure aku requirement nahi aku start kariya pe semti ki specific instrument or complex your system darkar ne create kariba normal air pressure भी thorium tomar hei pari plus setre kon asu darkar air contamination capacity is very less in compared to your uranium plus it is very human friendly jodi ete sara subidha miluchi environment friendly so definitely the world khali India no world community has decided to reduce the dependency on uranium and more focus to the thorium which is plentifully available in India that is what Odisha upare agency kara hochi गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वर्तमान आ पई 10 कोटी टंका आ पई खर्च करथिन रेहार खाली थोरियम नु थोरियम संगु कोन हबो थोरियम संगु कोन हबो वैनेडियम कोबाल्ट लेड एल्यूमिनाइट हला इल्यूमिनाइट सॉरी हला एल्यूमिनाइट सेल्यूमिनाइट हला सेल्यूमिनाइट ए सब जिंस ओडा पूरा रेयर अर्थ बहुत जिंस ओडिसा तो स्टोर हाउस खादान ओडिसा रे अछि these are the rare earth minerals including the thorium rare earth minerals हला including the thorium तमे जदी जिवो पुरी रो चंद्रभागा बीच हो कि गोपालपुर हो ओडिसा रो गोपालपुर तो बहुत एनवर्स गंजाम साइड रो एनवर्स पोटेंशियल हला these are the rare earth potential नेक्स्ट कोन देले या पे कोन रिसर्च सेंटर कराबो खास करी वर्तमान सदर्न ओडिसा माने जदी हम देखो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिसा माने गंजाम बारामपुर एप्सु एरिया रे गवर्नमेंट इंस्टॉल करिया को जाउछ आगु बढ़िया पुनी इंडस्ट्री चलची नाउ कम टू द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट्स बहुत इंपोर्टेंट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द पोर्ट्स 2036 से बदल लिखला USD 500 बिलियन हबो बोली माजी बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल वेयर हैला वर्तमान सेटा इंपोर्टेंट डिस्कशन बहुत बढ़िया प्रदीप्त वेरी नाइस लेट्स क्लैप फॉर प्रदीप्त बहुत बढ़िया हैला पार्टिसिपेट कुछ एवरीवन आई एम सो हैप्पी फॉर एवरीवन हैला इते जण बहुत जण करूछो वेरी नाइस वर्तमान से इनलैंड ट्रांसपोर्ट और स्पोर्ट्स पई वर्तमान देखिबा कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन ओडिसा रा पई कोन एडवांटेज हैला गोटे लेखिन एटा सो मेंस रे सो क्वेश्चन सो पचारियो हैला कोन देखिबा ओडिसा वुड आल्सो गेन फ्रॉम द ऑपरेशनलाइज नेशनल वाटरवे 5 हमर जो अछि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट आल्सो कोन कि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट माने जोडा हला गोटे हला तमरो मेरीटाइम आ गोटे इनलैंड रे कोन हो नेशनल वाटरवे 5 जोटे कनेक्ट करछि हुगली रिवर टू ब्राह्मणी रिवर एटी मु डिस्कस करछि नेशनल वाटरवे 5 एटी जो मु डिस्कस करूछि नेशनल वाटरवे 5 का को करछि एटी हुगली एटी की अछि हुगली वेस्ट बंगाल हुगली रिवर इन कोलकाता चलबे ना वेस्ट बंगाल ने की टिल ब्राह्मणी एटी मुनेली ब्राह्मणी रिवर ठीक अछि ब्राह्मणी रिवर को कनेक्ट कला ओडिसा रे हमर ओडिसा रे दिस इज योर national waterway 5 inland water system it has got an huge potential हैला again गवर्नमेंट रो जदी हमें नबा कोन पूर्वोदय विकसित पूर्वोदय को लुकिस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट रो हैला माने विकास ऑफ योर जदी विकसित योर ईस्टर्न लोकेशन को ईस्टर्न स्टेट्स को विकास करबे गवर्नमेंट हैज already our prime minister Narendra Modi already declared that maximum potential
is जदि आमर अछि that is your stored at the eastern states. So national water 5 को जानिबा industrial cluster wise जदि देखिबा हुगली river और ब्राह्मणी river संगरे major industries are coming. In fact, it crossed to touching some parts of your Jharkhand also. Let us know. कौन देखले national waterway 5 in the first phase of 20 new waterways linking mineral rich कोटी कोटी का कनेक्ट करछि तालचेर अनुगुल with पारादीप and धामरा पोर्ट. पारादीप धामरा पोर्ट संगरे भी कनेक्शन करूछि से. सर एबे हम ओडिसा रे मयूरभंज रो खनिज दिगरे गोल्ड स्टोर बाहर बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली ओडिसा रे सब जिंस धीरे धीरे बाहर करियो धीरे धीरे हला मिठा नहीं केबे जो जल्दी आसी सतीश किचन ऑलवेज वेलकम सतीश. ओके नेक्स्ट. So Paradip और Dhamra port to Talcher Angul connect with your Paradip and Dhamra ports, easing the logistic and lowering the transport cost. हैला Paradip और Dhamra port. Already हमें जानी चंदी ओडिसा रे जदि हमें देखिबा हैला केतरा पोर्ट अछि पोर्ट इन ओडिसा जदि मेटी नउची हैला ओडिसा रे पोर्ट ओके ओडिसा रे पोर्ट जदि हमें नेबा कोटी केतरा पोर्ट हमें ओडिसा रे दिस इज आवर ओडिसा रे नेले कोन प्रथमे एटी नेले प्रथमे हैला किए प्रथमे ऊपर तळु को ऊपर आछंती धामरा पोर्ट ठीक अछि धामरा देन पारादीप ठीक अछि धामरा पारादीप हैला धामरा ऊपर रहला देन पारादीप देन एठी आसला तमरो गोपालपुर एबे आ गुटे नुवा पोर्ट होछि हैला कोठी केंद्रापड़ा रे अस्तनंग नियाली पाखरे गोटे आ गुटे पुनी केंद्रा पाखरे कोन देखिबा एठी emphasizing the Odisha strategic sea route जदि हम देखिबा लोकेशन 22,700 crore invested for the largest ship manufacturing unit will be envisaged at the Kendrapada district. Can you imagine Kendrapada district रे जो माने केंद्रापड़ा बिलोंग कर तांक गोटे खुशी खबर हैला कोन पाखा पाखी स्ट्रेटेजिक रूट रो 22,700 कोटी टंकार largest ship manufacturing unit will be envisaged at the Kendrapada district. जेमती पूर्वी भारत रे देखो पश्चिम भारत रे किए देखिबा जेमती कांडला मु कहबी पश्चिम भारत रे किए अछि कांडला एटी किए अछि कांडला आई एम टॉकिंग अबाउट कांडला पोर्ट ठीक अछि कांडला पोर्ट गवर्नमेंट रो विजन देखो केते सुंदर कांडला पोर्ट रो कनेक्ट कला कोपड को एपटे पश्चिम रे हमर कोठी एटी ओडिसा रे हमर एटी देला कोठी दिस इज योर केंद्रापड़ा मु तो एटी ने देले केंद्रापड़ा जेमती दीनदयाल उपाध्याय मन रखडी फिल्म्स रे दीनदयाल उपाध्याय कांडला पोर्ट इज आल्सो रीनेम्ड एज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट. ईस्ट वेट गोटे हला हमर वेस्टर्न इंडिया रे वेस्ट रे आ एटा हला हमर ईस्ट रे एपटे हमर केंद्रापड़ा रे गोटे लार्जेस्ट शिप मैन्युफैक्चरिंग जेमते हमर विशाखापट्टनम एक्चुअली ईस्टर्न इंडिया रे बेसी नाही विशाखापट्टनम रे अछि हला तापर बहुत हेवी लोड ठीक अछि. तो हम देखले कोन कि लार्जेस्ट शिप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर व्हिच विल बी envisaged at the Kendrapada district and also with correlation of Sagarmala project. Government ro कोन Sagarmala project जदि हम देखिबा Sagarmala project a regular satellite port would be constructed at the Bahuda estuary along the Ganjam's coastline with expansion of 21,500 crore. देखो बाहुडा जो जगटा अछि हला गंजाम रो एस्चुरी बकरे सेठी भी सने कोन करिवे सागरमाला प्रोजेक्ट को रिलेशन करी की हला विथ रेस्पेक्ट टू दैट वन वी हैव कंस्ट्रक्टेड एंड बाहुडा एस्चुरी along the satellite port गोटे करहा satellite port वन ऑल द ईयर राउंड जेमति काहे कि इंडिया जदि स्ट्रेटेजिकली देखिबो इंडिया रो लोकेशन हला इंडियन ओशंस रे माने ओडिसा रो लोकेशन इज वेरी इंपोर्टेंट strategically the location of Odisha strategically the location of Odisha in the Indian Oceans is very significant. How? Because दो जहाज माने पास करी के आसुचंती से माने एई रूट रे कोठी एई हमर स्टॉपेज नेबे कोठी एई बाहुडा पाखरे केंद्रा पाखरे ठीक है बाहुडा गंजाम रे बाहुडा पोर्ट बाहुडा एस्चुरी जेमति मु कहे कि एंटायर जदि हम देखिबा कि एटी गोटे एटलास रे देखो जेमति तमरो हवाई आइलैंड को जाय हला वर्ल्ड रे हवाई आइलैंड को जाय कि गोटे फॉर द लोकल स्टॉपेज फॉर द शिप क्रॉसिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन जेमति वर्ल्ड रे तुम देखुछ जेमति हवाई गोटे स्टॉपेज एटी से माने फ्यूल नियंती खाइबे नियंती देन द शिप मूव हला वर्ल्ड ट्रेड जदि मु कहबी एग्जैक्टली सेम वाइज हमर गंजाम रे बाहुडा जो एस्चुरी अछि सेठी कोन करहाबो दैट इज एन लोकेशन बना हबो शिप माने एठी नेबे तामाने भाबो किते इन्वेस्टमेंट हो किते आसीबे सेठी पूनी व्यापार ट्रेड चलियो लोकल पीपल माने एम्प्लॉयमेंट पाइबे खाइबा बनेबे करिवे हला सर्विसेज इंडस्ट्री पडिबो ह्यूज विजन गवर्नमेंट
and that is what our strategic locations of Odisha. There question तुमको mains रे पचल. Discuss the significance of the strategic locations of Odisha's location in the Indian Oceans with context to your development of the ports and your estuaries. Definitely discussion लिखियो. It is all about thought provocation. मन रखो सीए धनी जहाँ पाखरे content अच्छी, content जहाँ पाखरे अच्छी सीए धनी. The more you have informative informations with you, you can able to express in a very lucid way and a larger way. Otherwise, it is very impossible to get good scores in your maths, right? Acha, puni dekhiwa. Along this budget, allocation of 500 crore for the development of an international international cruise terminal at Puri coast. Cruise terminal, international cruise terminal Puri pakhre bhi habo, which certainly boost the tourism and international sector. केवल खाली इटा नुह हला पर्यटन क्षेत्र को tourism sector and developing also international relations को भी बहुत दबो. कोठी पुरी रे जदि हम डायग्राम देखिबा खाली बाहुडर ती गला ता संग को पुरी रे भी जदि हम देखिबा दिस इज पुरी रे भी हमको डेवलपमेंट जिनसरा करा होछ काहे इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल माने जो माने भाबो दीटा सेंटर इंटरनेशनल खाली तमर बाहुडा नु बाहुडा संग के रहला पुरी भी रहला टूरिज्म सेक्टर सेठी भी आसीबो लोक जहाज रे जेमती आमे जाउछु जहाज रे अंडमान जाउछु बुलिया पे सेमती एपट भी आसी भाबो ता माने कोन हला समरी रे मु कहूची केंद्रापड़ा रे जहाज तयारी हला पुरी रे हमर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ला पूरा वर्ल्ड टूर लोक सब आसले टूरिज्म करिया पे पुरी रो एना बढ़िया पे प्लस एपटे सागरमाला प्रोजेक्ट संगरे हमर इन रिलेशन नै कि बाहुडा को कोन करा हला सैटेलाइट पोर्ट करा हला जोटा कि सब जंग गोटे स्टॉपेज रहइबो वर्ल्ड रो जत्ते भी सब आसुचंदी माने जेमती साउथ चाइना रू कि जापान रू गोटे आसला गोटे शिप तेल नै कि खाइबा नै से स्टॉपेज नेबे स्टॉपेज रे फ्यूएल नेबे खाइबा नेबे तपर पुणी जिबे से माने कोडी यूरोप को कनेक्ट करिया पे सो ओडिशा इज बिकमिंग ये in a very significant position strategically connecting the world with connecting India or Odisha with the rest of the world, whether it is Eastern Asia countries or the European countries or the African or the South American countries. This has to be kept in note, है ना? बिल्कुल गंजाम रे भी बहुत ए जिनसरा बहुत स्पीड अप गवर्नमेंट करूची है ना. अच्छा एतिक आमे जानले तो आमे कोन जानले कि हमरा केंद्रापड़ा आसिला मेजर केंद्रापड़ा गुटे आसिला जोदि कि तमरो शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेठी रहला सागरमाला को नेकी वेट करी कि बाहुडा रे गंजाम रे हैला सेठी भी गोटे तमरो बना हला सैटेलाइट पोर्ट बनाला गोटा कि ईयर राउंड सेठी द पोर्ट्स द शिप्स दोज आर फ्रॉम द फार ईस्ट कमिंग फ्रॉम योर जापान Philippines or the Japan, Philippines or Russia, China जोटी आसी से स्टॉपेज नेबे आउ तंकर खाइबा की तेल सब नेकी से माने जिबे से स्टॉपेज नेक्स्ट पुनी देखो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पुरी रे टूरिज्म को करिया दिस इज द मैग्निफिसेंट एनालिसिस जदि हम देखिबा कि गवर्नमेंट रो विजन टुवर्ड्स आवर इकोनॉमी ओडिशा टू बूस्ट द ओडिशा इकोनॉमी एट द ग्रास लेवल फ्रॉम द ग्रास लेवल एई बढ़िया जिंस आगु को आहुरी बढ़िबो गवर्नमेंट रो करिवो हैला. सो केंद्रापड़ा पिला माने very खुशी थबा मु भी बहुत खुशी हैला वेरी नियर हैला हमकु जिबा पाखरे जो गाडी नेकी जिबा बुलिया सब हैला भारतमाला प्रोजेक्ट रे भी नेम कोरापुट रो वाइजाक रो भी किछि डेवलप बिल्कुल एब्सोल्युटली नेक्स्ट. सो लास्ट कंक्लूडिंग एसेंस ऑफ द बजट कोन देखिबा कंक्लूडिंग एसेंस ऑफ द बजट. द बजट विल transcend tradition financial planning and the chief minister said it represents a strong and decisive steps towards the samruddha sasakt and samabeshi Odisha. That means a prosperous, empowered and inclusive state where development is at every citizen. समस्तंकर अधिकार अछि prosperity समस्तंकर अधिकार अछि डेवलपमेंट को एंड समस्तंकर अधिकार अछि गोटे समृद्धि लाइफ मींस पीसफुल एंड ये ए क्वालिटी लाइफ लीड करिया. सो दैट इज व्हाट जदि हम देखिबा कि ए अलाइन्ड रे विकसित ओडिशा दिस अलाइन्स विथ द ब्रॉडर स्ट्रेट विजन दैट इज अचीव विकसित ओडिशा 2036 एंड कंट्रीब्यूट द मीनिंगफुली टू ए डेवलप्ड इंडिया. जदि ओडिशा विकसित होची इंडिया भी विकसित हो आ ए जो थीम ता हमर अछि विकसित ओडिशा 2036 हैला विकसित ओडिशा कोन लिखली विकसित ओडिशा ए जो सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्कीम रे वी आर आल्सो अलाइन्ड विथ दैट वन विकसित ओडिशा स्कीम 2036 सुधा
हला एको विजन नै कि हमर गवर्नमेंट ओडिसा गवर्नमेंट चलची हला डेफिनेटली दिस बजेट डेफिनेटली विल रीच एंड विल अचीव दैट स्टेज ठीक अछि आज पे एति कहि कि मु रखुची डेफिनेटली सेशंस डेफिनेटली हेल्पफुल होबो आगो बळिया पुनी गोटे फॉर्मेलिटी जहां भी ज्योग्राफी ऑप्शनल सेठी मोर चलची आज आई सेड अर्लियर of UPSC ro your UPSC ro optionals ro already is there UPSC optional re अच्छी geography optional which has started and also online batch geography optional batch भी चलची जो माने interested they can connect me with this number 797809097 to connect करो geography optional is scoring and it will help in many papers in GS papers including mains and prelims also like GS also started GS batch is also be starting so those who are interested they can ping to me or text me WhatsApp करि परिबे ओके सो होप समस्त को सेशन टा इंटरेस्ट लगी थिबो ओके बिल्कुल 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 सेशन वाईटी इज ऑलवेज इंपोर्टेंट सो दैट आई कैन रीच टू द मासेस जो जो माने रिपोर्ट डेफिनेटली विल बी ओके yes Satish thank you I miss to all of you but we all are connected don't think that ki hela sir सब बेले available था स्टूडेंट्स ପାଇଁ हला thank you so much thank you everyone समस्त पुनी रो आउ ए जो सेशन टा आज हम पढिले आज हम डिस्कस करले मन रख हला ए बजेट सेशन जोडा भी तमे देखुछो डेफिनेटली एटा तमरो प्रीलिम्स हला पाई बहुत इंपोर्टेंट मेंस पाई बहुत इंपोर्टेंट आल्सो इंटरव्यू बहुत सारा जिंस हम डिस्कस करले एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंस विथ मी एते समय छोटोला संडे रे छाडी की बसी की सुनुछो आई एम डेफिनेटली ना तमरो ए डेडिकेशंस तमरो ए डिवोशंस डेफिनेटली इट विल पे टू ऑल ऑफ यू okay so we'll meet again thank you so much take care bye bye jai jagannath thank you so much thank you so much